Bad Decisions is for raw and unfiltered conversations. Guest opinions are entirely their own. Watch responsibly. And please don't use the show as a life manual unless chaos is your thing. Bad Decisions को बेबाक और बिना फिल्टर वाली बातचीत के लिए बनाया है. मेहमानों की राय पूरी तरीके से उनकी अपनी है. जिम्मेदारी से देखें और प्लीज इस शो को जीवन का ज्ञान मत समझें. What's the worst decision of your life? Sports is gambling. I have to back my own player, Dipti Sharma. She has done nothing wrong. मेंस क्रिकेट में जो प्लेइंग 11 है, जिनके बच्चे हैं, जिनकी फैमिली है और वो फिर भी क्रिकेट खेल रहे हैं. विमेन क्रिकेट में ये ऑब्जर्वेशन नहीं है. अगर मैं इस बारे में टिप्पणी करूँगी तो बहुत सारे सवाल हो सकता है. Welcome to Bad Decisions. 'Cause every step in your life is a decision. When is Chakda Express coming? I'm waiting for it. Bad decision. Camera rolling. Hello and welcome to Bad Decisions. My name is Ridhima Pathak. And today on my show, I've got with me a lady who could bowl fast. But not just that. She laid the foundation of the women's cricket that you see today. Very fondly known as Chakda Express is Jhulan Goswami. Thank you, Ridhima. How have you been, ma'am? I'm good. How are you? Well, I don't have any bad decision, but the name of the podcast is a bad decision. So now I'm tensed. Anxiety, that butterfly is going into your stomach, and like that kind of feelings I'm having. You're feeling So it? you're going to bowl bouncer? No. I'm going to To keep me? it calm. I'm going to let you do your job. Oh my God. Because you do it so beautifully and you have shown the kind of aggression that you've shown on the field. But I know you personally and you're the softest human I know. Thank you. You really are. So sometimes I feel like, where is that aggression really coming from? In cricket field, as an athlete, that 22 years is yours, and there in that place, if you're not express yourself and if you don't accept those challenges, then you're not going to survive over there. So for me, having those challenge, accepting those challenge, and express myself, give all out, and having as an emotional person. And your emotional should burst out in your right way. And right way is what? It was my bowling. Yeah. So if I able to get early breakthrough, if I get wicket, my team will do well. My team will get the benefit. And yes, at the same time, I also get benefit because number of wicket will come to my books also. So that's why that aggression, that passion. Yeah. And then that accepting those challenges and achieving those challenges was even satisfying. Yeah. So that's why probably, in a cricket field, whenever I played, I was very ruthless. I was ruthless. And I was ruthless about myself also in a practice session. For me, perfection was, it has to be 101. 100 में 101% आपको परफेक्शन के साथ आपको जाना है. मार्जिन ऑफ एरर है दिस मच. सो इसलिए हो सके वो एग्रेशन ज़्यादा आती थी. एंड मैं जब खुद प्रैक्टिस करती थी, मैं भी अपने आप को कभी माफ नहीं करती थी. हर चीज़ के लिए मैं चैलेंज डालती थी अपने आप को. अगर कोच बोलते थे शुरू में 10 राउंड भागना है, तो मैं 15 राउंड भागने की कोशिश करती थी. कुछ चीज़ सीखा है कहीं किसी ना किसी से मैंने पिक किया था, इसलिए हो गया वो. But ma'am, जब आप बोलते हो कि and why this show is called Bad Decisions and why I have legends like you on the show is because you have taken आपका strike rate जो है to take good decisions is much higher as compared to people who are not at your position, and that's the reason why you've reached a certain level. But when you look back, every human being when they look back, there will be a moment in time where you will look back and say यार ये ना शायद गलत हो गया. And it need not be professionally. It could be personally. So, coming to the crux of the podcast. Expecting. Jhulan ma'am, what's the worst decision of your life? I think I don't have as such worst decision in my life, but जो challenging phase था, I think neglecting in my education part because of sports. Now I understood my family, my parents was सबसे सही डिसीजन था उनके लिए, जो मेरे को हमेशा बोलते थे स्पोर्ट्स के साथ खेलना भी ज़रूरी है,
बट उसके साथ एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके साथ पूरा जिंदगी रहेगा। स्पोर्ट्स आपके साथ 10-15 साल रह सकता है, उसके बाद ख़त्म, उसके बाद आपका एडुकेशन आपको आगे लेके जाएंगे। आई थिंक उस डिसीजन को मैंने हल्का लिया था, ज़्यादा सीरियस नहीं ली थी। मैं हमेशा बोलती थी नहीं मुझे क्रिकेट खेलना है, आई वांट टू बिकम ए प्रोफेशनल एथलीट, आई वांट टू डू वेल इन माय स्पोर्ट्स, because of a lot of other circumstance was there. You take the Chakda Express name, so I'm coming from Chakda, taking train 70 kilometers every day, 60 and both ways 120. आप ट्रेनिंग में सबसे पहले आना चाहते हो, मतलब the discipline what I have learned from that train journey. So by the time you go back home and you are exhausted, एंड हफ्ते में आप 4 दिन या 5 दिन ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके बाद स्कूलिंग टाइम आप मिस करते हो, आपके पास वो एनर्जी नहीं होता है बुक्स पढ़ने की, जो ट्यूशन का जो होमवर्क है वो करने के लिए आपके पास वो एनर्जी नहीं होता था। बाय द टाइम 7:38 यू जस्ट गोज फॉर डोज ऑफ। सो हमेशा यही होता था, बट मेरे को लगता था मैं और सीरियस हो सकती थी, एंड आई थिंक दैट वाज माय बैड डिसीजन, जो मैं एजुकेशन को बहुत हल्का लिया था। I'm actually shocked कि आप ये बोल रहे हो, because you're a legend, आपके नाम पे स्टैंड है यहाँ पे कैब ईडन गार्डन्स में, आपको एक वॉल डेडिकेटेड है, you've achieved so much। आप अभी कमेंट्री कर रहे हो, यानी आपकी जो पकड़ है लैंग्वेज में, क्योंकि आप हिंदी में करते हो, आप इंग्लिश में करते हो, आप बंगाली में करते हो, वो बहुत कमाल की है। सो व्हाट इज द सिचुएशन इन योर लाइफ राइट नाउ वेयर यू फील दैट you missed out on education? Is there a place where you wanted to be? Wanted to complete my masters. Those are the dreams I was always having, and from my childhood, because coming from orthodox middle class background, and Bengali families are very much into education and culture. Yeah. And my family always told me that focus on education, because education is one thing that जो आपके साथ रहेंगे एंड आपको आगे लेके जाने में हेल्प करेगा। Okay. So I feel that nowadays, when you are doing commentary, you have to do a lot of research. You have to go through a lot of statistics, and उसमें क्या होता है, आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं देर तक नहीं रहता है, बिकॉज आप इतना टाइम क्रिकेट ग्राउंड पे क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट देखते हो, बट जब पढ़ने का टाइम आता है ऐसा लगेगा नींद आ रहा है, तो कंसंट्रेशन कम हो जाता है। सो मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। माई मॉम, डैड, माई ब्रदर, सिस्टर, माई ग्रैंड मॉम ऑल्सो, दोज डेज इन दैट ब्रिटिश कॉलोनियल एरिया पे भी वो क्लास 10 का उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट किया था। तो इसलिए माई बैकग्राउंड एंड माई फैमिली, एवरीवन complete their graduation except me. So I feel that on that area I was little bit behind than others. So yeah. आज के डेट में आपको उसकी वजह से कोई inferiority फील होती है? क्योंकि मे बी do you want to reach a leadership position, you already are in one, but कोई different CEO, CFO level आप reach करना चाहते हो in an organization? हो सकता था बिल्कुल, अगर वो आपके पास वो डिग्री होता था, आप आगे और जाके डेवलप कर सकते, तो कहीं और चीज़ हो सकता है, क्योंकि आप सिर्फ एक एरिया पे नहीं काम कर सकते, आप आगे भी जा सकते हो। जैसे आप बोले CEO या CFO, आप हो सकते तो ये सब चीज़ें, बट अभी वो मुश्किल है, क्योंकि आप आई नो दैट्स नॉट my cup of tea. I can focus on my cricketing area, my expertise, although I'm very much happy on that, but yeah, I missed out. It was not like in my things I have genuinely missed out, because of the circumstance also did not allow me. Yeah. Because if you want to go to the school, then you're missing out the practice session. Yeah. So these other things happen constantly. Probably if I'm born and brought up in city like Kolkata, so probably I can manage with both the things in a balancing in such a way. Right. Because it's traveling every day, every alternate day, 60, 120 plus kilometers. So कहीं ना कहीं आपका स्कूलिंग, आपका ट्यूशन आप मिस करते रहते हो। आपको कहीं ना कहीं एक साइड गिव अप करना पड़ता था, क्योंकि आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था गाँव में, उस जगह पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था वुमेन्स क्रिकेट को सीखने के लिए। वुमेन्स क्रिकेट को फर्स्ट ऑफ ऑल नोबडी इज अंडरस्टूड व्हाट वाज वुमेन्स क्रिकेट। लड़कियां खेलते हैं, किसी को पता ही नहीं था। सो उसमें से आप बाहर निकल रहे हो एक ऑड इवेंट के हिसाब से, लाइक क्रिकेट वाज वेरी मच जेंटलमैन गेम। सो उसमें आप गांव में बोल रहे हो, घर पे बता रहे हो आप वुमेन्स क्रिकेट खेल रहे हो, तो दैट वाज अ ह्यूज सेटबैक। जो ये कौन सा गेम है जिसके बारे में हमारे पास कोई हिस्ट्री, उतना जानकारी नहीं है। तो
उसमें काफ़ी ना कहीं आपको प्रॉब्लम हुआ है, कहीं ना कहीं आपको उसके वजह से काफ़ी चीज़ गिव अप करना पड़ा। तो उसमें से एजुकेशन वाज वन एरिया जो मैं, बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग फैसिलिटी वाज नॉट अवेलेबल इन माई सिटी। आज के डेट में हो सके चकदा में बहुत सारे एकेडमी हो, या नदिया डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे एकेडमी हो जहाँ पे लड़कियाँ या लड़का लोग, बॉयज़ गर्ल्स स्कूलिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी आगे लेके जा पाएंगे। हम लोग के टाइम पे वो चीज़ फैसिलिटीज था ही नहीं। आपको अगर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है तो आप एथलीट करो या कबड्डी खेलो, बस यही 2 स्पोर्ट्स था जो स्कूल पे भी अलाउड था, बट क्रिकेट वॉज नेवर देयर। सो आपको ऑल द वे कलकत्ता आना ही पड़ता था बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑल। Well, growing up, since you touched upon education, and I know कि Bengali families में हमारे यहाँ भी academics को यहाँ पे माना Yes, जाता है, right? absolutely. So when you were growing up, did you face a lot of criticism, एक तरीके का lack of respect क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे? Yes, absolutely, 100% true. In our school, आप स्कूल में जब जाते थे तो everyone is asking me about your homework, because most of the time because of cricket training and all, homework मिस करते थे तो obviously सबके सामने आपको bully किया जाता था क्लास में। bully not in a bad way. A teacher is always scold you because आपको उनका जो काम था हम complete नहीं किया, तो इसकी वजह से आपको डांट खाना ही था। So I was the very common person in a class, in a school that very consistently way मैं homework miss out करती थी. I used to get a lot of guardian call because of that, and my mom used to get really upset about that thing because my brother and sister, they never got a guardian call and anything, and because of me she used to come to the school and whatever the teacher used to say, quietly she has to listen because she don't have any word, because she tried to convince them that she is playing cricket, but always teacher used to say what she will do in her future if she is not focusing on study. So these are the things. It was very common thing in my house, and whenever she used to go to school and coming back and that day night and everybody is in my house, I try to chapat mil hi jate the. So how did you fight that? Because I was very much determined. I was very much passionate about my game. I know I can do it. I know I have that dream inside me. Every time I'm growing up with that dream. So did you throw a tantrum? Yeah, you performed. What did you? I just perform. Tantrums किसको दिखाओगे? जब ट्रेन में जाते थे सब बोलते थे पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप क्रिकेट खेलने क्यों जा रहे हो? इस एज में तो आपको तो एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, एंड वो भी वुमेन्स क्रिकेट। कुछ नहीं है, फ्यूचर क्या है, कहाँ आता है वुमेन्स क्रिकेट, कौन लोग खेलते हैं वुमेन्स क्रिकेट में, नोबडी नोज। एंड आप ऑन दैट टाइम अगर आप अच्छा भी क्रिकेट खेलोगे बड़े मुश्किल से आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएंगे स्टेट लेवल खेलने के बाद, अगर अच्छे खेले तो। दैट ऑल्सो ह्यूज क्वेश्चन मार्क। एंड फॉर मी आई ऑलवेज बिलीव स्पोर्ट्स इज गैम्बलिंग। आप स्पोर्ट्स में सक्सेस होना कंपल्सरी नहीं है। एजुकेशन में आप एक जगह पहुंच जाओगे, बट स्पोर्ट्स में नहीं है, अनसर्टेनिटी के साथ है जिंदगी पूरी। तो दैट वाज अ रिस्क, दैट वाज अ चैलेंज, एंड दैट चैलेंज आई हैव टू इन अ वेरी यंग एज। बहुत छोटे उम्र पे मैंने वो ले लिया था। आई वॉज 15-16 years old that time when I start playing professional cricket. I start taking cricket as in professional way. So when was that moment? I think 1997. I saw Eden Gardens में पहली बार Women's World Cup final. Belinda Clark was winning the World Cup trophy. Yeah. And she was taking the victory lap. I was a ball girl. Ball girl. Yeah. So वो मेरा सपना था, मुझे उसके लिए इंडिया खेलना था, मुझे इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना था। And that dream I have seen that day, and I was chasing my dream till 2002. And then obviously जब मैं खुद वर्ल्ड कप खेली सो वो अलग बात है, बट 2002 तक जब तक मैं इंडिया नहीं खेली थी, दैट वाज माय ड्रीम। एंड लोग जो भी बोलते थे तरह तरह के बातें, आई नेवर टेक इट सीरियसली। यस, आई यूज्ड टू फील बैड, but okay, fine. I know next day I can come back and enjoy my journey. What was that one thing that people said at that time जो आपको आज तक याद है? I think सबसे ज़्यादा आप बुली हुए हो ट्रेन में। When you are traveling in a very young age alone most of the time, so people will talk a lot of negative stuff. आज के डेट पे सबके पास जानकारी है वुमेन्स क्रिकेट के लिए, सबके पास सोशल मीडिया में सब कुछ अवेलेबल है।
आप सर्च करोगे तो आपको सब डेटा मिल जाएगा। उस टाइम कहाँ ये सब था, अपने टाइम में तो ये सब था ही नहीं। सो लोग हमेशा ही बोलते थे आप एजुकेशन में फोकस कीजिए, आप क्यों जा रहे हो क्रिकेट खेल के, क्या मिलने वाला है, वुमेन्स क्रिकेट क्या होता है, वुमेन्स क्रिकेट आप खाता है या पीता है, दैट वाज द टर्म्स दे यूज्ड टू यूज। सो बुरा लगता था, हमें चुपचाप सुनते थे, सॉरी अंकल आंटी, चुपचाप सर नीचे करके बैठे रहते थे। एंड मन में बोलते थे एक दिन ना टाइम आएगा जब वुमेन्स क्रिकेट सबसे ऊपर रहेंगे और आप लोग सोचोगे, आप क्या- बोलते थे अपने जवाब आप में, को- अपने आप को बोलते थे आप। हाँ, जो एक दिन ऐसा दिन आएगा वुमेन्स क्रिकेट सबसे ऊपर आएंगे और आप लोग जेलस फील करोगे। सो आई टू से टेल माई सेल्फ दैट ऐसा आना चाहिए, भगवान प्लीज ऐसा एक दिन देना वुमेन्स क्रिकेट को जो इनको सबको मैं चुप करा सकती हूँ। हम लोग सारे इनको चुप करा देते। एंड ये सिर्फ मेरे जिंदगी में नहीं है, सबके लाइफ साथ हुआ है। उस जनरेशन में जितना भी लोग क्रिकेट खेले सबके साथ हुआ है। आई थिंक सबने इस चीज को फेस किया है। मैम वो टाइम कब था जब आपको लगा कि अब ये हॉबी नहीं है, अब ये सिर्फ एक पैशन नहीं है, अब आप वो इंसान बन सकते हो, एन आइकन फॉर दिस कंट्री हु वुड चेंज द शेप ऑफ वुमेन्स क्रिकेट? वाज देयर अ मोमेंट वेयर यू रियलाइज्ड दैट? वेल ऐसे तो आप सोच नहीं सकते हो जो यू आर गोइंग टू चेंज, यू आर गोइंग टू बिकम एन आइकॉन ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट। बट हाँ, when I have represent India 2000 debut for India 2002 against England, and that time I realized yes, India तो खेल लिया, what next? I think my mom told me one good thing in 2007 when I received ICC award. We do something that नेक्स्ट जनरेशन के लड़कियों के पास जो स्ट्रगल तुम लोगों के जनरेशन ने किया वो नहीं होना चाहिए। They should come automatically and take their sports, as a career options. अब मैं इनिशियल स्टेज में जब मम्मी ने ये बात बताई थी, मैं इतना सीरियसली नहीं ली थी। बाद में कुछ दिनों के बाद मुझे हिट किया था, मम्मी तो बहुत सीरियस बात कर दी। आपका खुद का जर्नी एंजॉयमेंट से कुछ नहीं है। आपका जर्नी का एंजॉयमेंट तभी होगा जब वुमेन्स क्रिकेट का खुद का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, खुद का एक आइडेंटिटी मिलेगा, एक खुद का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेंगे, तभी वुमेन्स क्रिकेट ऊपर आएंगे। Yes, you are enjoying because you are getting a little bit of limelight. You have done something, that's why getting that recognition. That's very good. You must enjoy. But that things hit me very hard in my core. But also look at her journey. The lady who would say that, Yeah. पढ़ाई करो, Yeah. क्यों क्रिकेट खेल रहे हो? बिल्कुल। She was now telling you कुछ ऐसा कर दो कि पूरा आगे का जनरेशन सुधर जाए। Because she understood one thing. She understood about my passion, my honesty, and my dedication. She was one person who always beside me, always pushed me. And initial phase, yes, she also bit, nervous, anxiety इनके साथ था, इसलिए क्योंकि she was not aware of women's cricket much. But later part when she understood that women's cricket is going nice direction in a sense, at least 4-5 लोग खेल रहे हैं, मैं कोच के साथ बात किया, उन्होंने अच्छा पॉजिटिव बात किया उनके साथ, तो she has that little bit of जो fear था वो हट गया था। And then she was becoming one of the biggest support system of my career, and she is always one person who is always push me to do best for next game. So मैम वो दिन कैसा था जिस दिन आपको इंडिया के लिए कॉल आया? I think that was the biggest moment in my life. Entire 20-year career में सबसे बड़ा moment था वो, जिस दिन मुझे first time 2002 में मेरे को बताया गया जो you are selected for Indian team. I was super happy, and I feel that yes, जो सपना देखी थी मैंने 1997 में, वो सपना मुझे सच होते देखा। And my family, my entire relative, friends, my coaches, all was very happy that time. क्या कर रहे थे आप उस दिन? That day? I think What do you remember that day? I think we were playing some tournament, and after that one of those selector called me and said that you have been selected for Indian team an upcoming home series against England. I said are you sure? Yes, you should be very proud about. When I got that call from selector, and then next call I called
I'm my coach, Shopan Sadhu sir. I said, sir, I have been selected for Indian team. And he was also very happy. He also enjoyed that moment. Wow, that was a great news. You should do well. And finally, your hard work pays off and all those things. And then I called my mom and dad and my family. And they also got very excited. And my grandma was alive that time. She was also super happy during that time, and she said, wow, that was the biggest moment. Entire family should feel proud. And she was the biggest supporter, in early stage. Her role was very important. Yeah. In my career, her role was very significant. For me, it was very proud. I jumped like anything in that time, and I feel that wow, finally India cap पहनने को मिलेंगे. उससे पहले क्या होता था ना, सीनियर्स होते तो वो इंडिया कैप टच नहीं करना, वो सिर्फ इंडिया प्लेयर यूज करते हैं. वो इंडिया जर्सी है, आप इसको टच नहीं कर सकते, इसको पहन नहीं सकते हो. और पहनने के लिए नो, यू हैव टू प्ले फॉर इंडिया. दोज आर द माहौल था उस टाइम इंडियन टीम में और सीनियर्स टूर्नामेंट में. सो वी यूज्ड टू फील भाई हमें भी इंडिया खेलना पड़ेगा एक दिन, तो हम भी बोल सकते हैं वी आर इंडिया प्लेयर. सो या किसी ने आपको बोला कि चलो क्रिकेट खेल रहे हो तो कम से कम बैटिंग करो, बॉलिंग क्यों कर रहे हो? देखो, बॉलिंग से ज्यादा मैं बैटिंग ही करती थी पहले. अंडर 19 एज तक आई वाज ए नंबर 3 बैटर, बट unfortunately my coach doesn't want me to focus on my batting. He was always telling me that you have such a good height, you have a good action, and you should focus on your bowling more and more and more, and you will get more wicket and you will be very useful bowler. And in women's game, he was coaching for last 10 years, 20 years. He said that I never saw someone having such a smooth action. When you have that action, why to waste? So, मजा आया बॉल डाल के. Now when you came to the India camp, ma'am, were you bullied? No. Women was supportive of the fact wherever you came from. I was lucky enough in that case, because I played for my institution team here in India, and I saw my seniors already there itself. People like Anjum, Purnima Rao, Anju Jain, all those seniors were there in Air India team. So I already start following them, understood them, how to behave like a professional cricketer. So वही चीज़ हमने सीख लिया था बहुत जल्दी अपने सीनियर्स से. जो what is international cricket. International cricket में आपको क्या खेलना? It's not about the skills, it's about mindset, it's about preparation. और प्रेशर को अच्छा से हैंडल करना. वो चीज़ मैंने एयर इंडिया में बहुत जल्दी सीख गई थी. एंड जब आप एयर इंडिया टीम से डोमेस्टिक खेल के आप इंडियन टीम में जा रहे हो, तो यू मीट ऑल दोज सीनियर्स, दे आर ऑल्सो सेम. Anjum was our captain. She was leading Indian team that time. So it was very easy for me. I think I was fortunate in that case. Right. I never got bullied and all. So yeah. Well, now when you came into cricket and you spoke about that bad decision that in life I felt like I missed out on my education. Yeah. What is a decision that you probably reflect upon or regret in your cricketing career? Cricketing career, as such, I did not have personal regret, but yes, I played 50 overs World Cup. I think out of 5, we played 2 finals, 2005 and 2017. I think 2005 and 17 दोनों हम लोग जीत सकते थे, बट वो नहीं कर पाए. दैट वॉज अ ह्यूज रिग्रेट दैट मेरा घर में कैबिनेट में सब ट्रॉफी है, बट एक ट्रॉफी नहीं है, वो है वर्ल्ड कप ट्रॉफी. Whatever I did with lot of passion and lot of honesty, and I enjoy each and every moment. Yeah. Do you carry a certain emotion regarding the fact that you couldn't have a World Cup trophy? Do you carry a certain emotion today? Not now. Not now. Not now, because last year you were also there, I was also there in the ground where Harman, Smriti, Jamie, Richa, they lift a trophy. Dipti, they lift a trophy. First time ever in women's cricket, 50 overs World Cup trophy has come to our country. And after 50 years of waiting, women's cricket started in 1973. Only one common was that we have to win this time World Cup.
every year, every last 5 World Cup we played, and every discussion was that one line, we have to win this World Cup. This time we cannot miss out. So finally, when last year we won that trophy, and way our girls played that tournament, that was an incredible tournament. That was a lot of emotions, lot of ups and downs, the social media buzz, entire country is backing them. Yeah. The electrifying atmosphere in that ground, D.Y. Patil Stadium. I think it was an incredible moment for women's cricket. I think one of the finest moment. Yeah. And and after that, when Harman and Smriti Came to give the us series. that hug and all, because that was their trophy. Yeah. वो मेरा trophy नहीं था, because we did not won the trophy. They have won. And I feel huge thanks to Harman and Smriti. But वो जो victory lap में उन्होंने भी हमको शामिल किया था. I feel very touched about that, because it generally होता नहीं है. आप अगर स्पोर्ट्स में देखो, काफी जगह ऐसा हुआ है जो एक्स प्लेयर्स को कभी भी आप प्रेजेंट उस सर्कल में नहीं बुलाया जाता है. अश्विन ने बोला कि मेंस में नहीं I हुआ. don't know what he said. Yeah. But ways Harman and Smriti allow us to be part of that celebration, I think for that we should feel proud, and we should thanks to them, because that's a huge gesture from their team, and that's why they are different than others. Yeah. That's why I always said Harman and Smriti is different leader, different kind of person, and they understood. They give value to all small things, and that was a huge moment when I also break down when Harman and Smriti hand over that trophy. Julu, this is for you, and we have won it finally. Yeah. I said, yeah, finally is trophy हाथ में है. Many times we do the trophies, टूर्नामेंट के पहले फोटोशूट बहुत बार किया है उस ट्रॉफी के साथ, बट पकड़ के कभी नहीं रख पाए थे, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम ट्रॉफी को ऐसे पकड़ के हक किया था. सो दैट वाज द बिगेस्ट मोमेंट, ऑनेस्टली स्पीकिंग. इट वाज, आई वाज फीलिंग लाइक आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम, एंड आई वाज देयर इन देयर. I'm enjoying, I'm bowling, I'm feeling, and it was, बहुत मजा आया. Right. वो मजा बहुत कम आता है जिंदगी में, तो उसमें से एक मजा था उस दिन रात 2 November. Wow, what a moment. It took away the residual emotion that you have of not winning the World Cup in 2027. Because I started my career watching winning World Cup trophy. When Willenda Clark won that victory lap, doing that victory lap, Melanie Jones was there, Karen Rolton, Fitzpatrick. I can see, and Lisa Catley, she is my WPL Mumbai Indians head coach at this moment. She was there in that team. Yeah. So I know that feelings. I know, क्या होता है. मैं हमेशा उन लोगों को पूछती थी, ये कैसे फील होता है वर्ल्ड कप जीतने के बाद, आपको क्या लगता है, कैसे प्रिपरेशन करता है. एवरी टाइम व्हेनेवर आई टॉक टू माय ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स और इंग्लैंड फ्रेंड्स लाइक लॉटी, लीजा स्टेलेकर या लीजा केटला, आई यूज्ड टू आस्क देम कि कैसे फील होता है, कैसे प्रिपेयर करते हो आप, क्या होता है आपका प्रिपरेशन में, जो हम लोग हमेशा पीछे चले जाते हैं, कहाँ पे गलत हो रहा है. सो आई वॉन्ट टू ट्राई तो मतलब उनसे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ सीख के हम यहाँ पे अगर डेवलप कर सकते हैं तो. बट ठीक है, उस टाइम डिफरेंट एटमोसफियर था, अब बहुत बेटर है. बट वी मस्ट गिव वन क्रेडिट टू BCCI, पर्टिकुलरली जय सर, जिस तरीके से उन्होंने WPL को लेके आया राइट टाइम पे. एंड WPL आने के बाद जो एक सेल्फ बिलीव आने लगे अपने वुमेन्स क्रिकेटर में, वो अलग ही था. एंड एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, दैट्स मतलब आज के दिन पर बहुत बड़ा सपोर्ट है. वो सपोर्ट अपने लड़कियों को मिलने लगे WPL के बाद से. एंड उसके बाद प्रेपैरिटी मेंस एंड वुमेन्स का सेम मैच फीस रखा. दैट वाज अ ह्यूज थिंग. एंड बिग क्राउड के सामने खेलने का जो एक प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को ऑब्जर्व कैसे करना, वो भी सीखा है अपने इस टीम ने. इसके वजह से वो वर्ल्ड कप में वो रिफ्लेक्ट हुआ. एंड जिस तरीके से WPL आने के बाद नया लड़कियों के एक्सपोजर मिलने लगे, वो बहुत बढ़िया था. सो आई थिंक यू मस्ट गिव क्रेडिट टू BCCI. 100%. And the RBA, and that's the reason why the turnaround has happened. Yeah, absolutely. But coming back to your career, दो चीजें that sort of stand out apart from all the achievements. I'm looking at things that were talked about. एक तो ये था कि 2017 में जो हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए इंग्लैंड के अगेंस्ट, आपने उसके बारे में बात की. और एक था आपका लास्ट ODI इंटरनेशनल मैच जो था आपका,
फेयरवेल मैच, उसमें एक इंसिडेंट हुआ था, मैन कार्ड इंसिडेंट विद दीप्ति शर्मा, जिसमें आपने दीप्ति को सपोर्ट किया था और करना भी चाहिए था बिकॉज इट इज वेरी वेल विद इन द रूल्स. बट एट सम लेवल डिड यू थिंक दैट दैट इंसिडेंट ओवरशैडोड your final match, your final ODI match? I don't think so, Ridhima. Honestly speaking, as a senior member of the side, it was my responsibility and my important things was I have to back my own player, I have to back my teammates, my friends, and one of the main player, Deepti Sharma, because she has done nothing wrong. जो rules पे है उसने उस रूल्स के दायरे में आके उसने फॉलो किया था. किसी को पसंद आए नहीं आए, दैट्स देयर प्रॉब्लम. अगेंस्ट द रूल्स कोई काम हुआ था? क्रिकेट का लॉ के अगेंस्ट कुछ काम किया था उसने? नहीं ना. विद इन द रूल्स काम किया था, तो सवाल ही नहीं आता. तो फिर बात तो बहुत लंबा हो सकता है. 2019 वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड. करेक्ट. उसमें बॉल बैट पे लगने के बाद चौका गया था. किसी ने हाथ ऊपर करके बोले थे उस टाइम, नो इट वाज अनफेयर रन, वी आर नॉट गोइंग टू टेक द वर्ल्ड कप. किसी ने बोला था? तो दीप्ति शर्मा को क्यों टारगेट कर रहे हो? बिकॉज यू लॉस्ट द सीरीज बिकॉज 3-0. दैट्स व्हाई यू वांट टू ट्राई टू डाइवर्ट द नैरेटिव टू दीप्ति शर्मा. Because you want to control your own way. I'm so sorry. If I'm there, whenever these wrong things happen, I always fought. And I always take a stand for my own people. I'm right or wrong, I don't know. As long as she is my teammates, my buddy, and I will fight for her. And that is my usul. उसमें मैं किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे. ये मैंने पहले भी कर चुकी हूँ टीम के, उस दिन भी किया मैंने. एंड मेरे आई वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट मेंबर दैट टाइम. सेविंग दीप्ति, बैकिंग दीप्ति इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मेरा रिटायरमेंट मैच अंडर शेडो हो जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था उस टाइम. बट दीप्ति के साथ रहना, दीप्ति को बैक करना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. मैम कुछ चीज़ें हैं कि वुमेन्स क्रिकेट का एक असर तो पड़ा है कि स्पेशली वर्ल्ड कप जीतने के बाद, क्योंकि आवर कंट्री लव्स चैंपियंस. तो मैं देख रही थी इस बार आईपीएल में कई सारे फादर्स अपनी बेटियों को लेके आए थे मैच दिखाने के लिए, और वो मुझे बहुत ही ब्रिलियंट चेंज लगा. आपके अनुसार वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिस लेवल का शिफ्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या वो हुआ? देखिए, हर चीज़ का ओवरनाइट जंप नहीं होने वाला है. हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में के हिसाब से अगर चेंज हो रहा है, ये आप बताओ. मैं तो इनसाइडर हूँ बिकॉज मैं क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट खेली हूँ, मुझे पता है. आप बताओ आउटसाइड से क्या लग रहा है? मैम आउटसाइड से ऐसा लग रहा है 1983 हुआ था. हाँ. तो एक तरीके का रेवोल्यूशन आ गया था इस देश में. हाँ. वो रेवोल्यूशन अभी उस तरीके से आया नहीं. मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा से आया है. इफ यू कम टू द एकेडमीज, you will see number of girls coming in an age of 5 जिसको बैट पकड़ना भी नहीं आते. मम्मी पापा चाहते हैं ये स्मृति मंदना बने, ये हरमनप्रीत बने, और जेमिमा रॉड्रिग्स, और ये शॉट मारे रिचा घोष की तरह. दैट आई एग्री. बट कमर्शियली लोग क्यों नहीं? कमर्शियल इतना जल्दी नहीं हो सकता, टाइम देना चाहिए. डेवलपमेंट तो है, डेवलपमेंट है, मैं मानती हूं. तो वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, जो बिल्कुल मतलब डॉट था, जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, कुछ टेलीवाइज नहीं होता था मैचेस, सीरीज कब है पता नहीं होता था. जहाँ पर वर्ल्ड कप का 10 दिन पहले आपको पता चलता था कैंप है, 10 दिन 5 दिन का कैंप करके आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो. जहाँ पे साल में एक ही सीरीज मिलता था, वहाँ पे आपके पास प्रॉपर FTP है, जहाँ पे आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, आपका पे पैरिटी आया है यहाँ पर, आपके पास WPL है, आपको पास ओवरसीज लीग खेलने का परमिशन है. Correct. जो शुरू में नहीं था. करेक्ट. जब ओवरसीज लीग स्टार्ट हुआ था, प्रीमियर लीग, हम लोगों को बोला गया था मेंस क्रिकेटर नहीं जाते तो वी कैन नॉट अलाउ यू टू गो देयर एंड पार्टिसिपेट दैट लीग. सो जो चीज डेवलपमेंट में है, प्रोसेस में है, वो डेवलप हुआ है. अंडर 15
एज ग्रुप टूर्नामेंट बंद हो गया था, फिर से स्टार्ट हो गए अंडर 15 एज ग्रुप टूर्नामेंट। लास्ट 4 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में अंडर 15 क्रिकेट चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वो। अंडर 23 बंद हो गया था, फिर से स्टार्ट हुआ है। इमर्जिंग टूर नहीं होता था, अभी स्टार्ट हो गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2 साल से, मतलब पिछले 2-3 सालों से इंडिया जीते हुए क्यों? बिकॉज यही तो डेवलपमेंट है, ये तो ग्रोथ है। कॉमर्शियल विल नॉट कम, बट यस, आप WPL का कैसे कॉमर्शियल नहीं कर सकते हो? नहीं आप WPL में देखो कुछ जिस तरीके से इंडिया में सबसे बिग हाउसेस आए, जो इनके पास IPL टीम है, उसी ने आके विमेंस क्रिकेट को भी डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में रखा उन्होंने। करेक्ट। MI, RCB, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस आए सामने, आके टीम लिया एंड ग्रोथ देखो विमेंस क्रिकेट की, उसमें भी बीट्स लगा। ऐसे नहीं, ऐसे जस्ट ले लिया किसी ने, नहीं। I agree. एंड उसके बाद कमर्शियल जो आप बोल रहे हो, यस 100% उस ब्रांडिंग के हिसाब से वहां पे पहुंचने के लिए हमें और अच्छा करना पड़ेगा। अभी भी हम लोग T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते, हम 50 ओवर्स वर्ल्ड कप जीते। होपफुली अभी T20 वर्ल्ड कप अगर जीत गए इंडियन टीम, डेफिनेटली यहाँ से और एक जंप मिलेगा हम लोगों को, वुमेन्स क्रिकेटर्स को। होपफुली आप बाकी जो करंट इंडिया प्लेयर रहेंगे उनके लिए आपको 6 महीने का वेटिंग लिस्ट के बाद आपको मिलेगा। शायद तभी ना मिले, बट दैट विल बी द अल्टीमेट ग्रोथ। करेक्ट। क्योंकि हमें जीतना पड़ेगा। इंडिया ऐसे एक कंट्री है जहाँ पे आपको हमेशा धमाका चाहिए। एंड वो जैसे आपने बोला 1983 तभी इंडिया में क्रिकेट रेगुलेशन हुआ है, एंड उसके बाद से क्रिकेट से डिफरेंट स्पोर्ट्स हो गए। आप अगर बैडमिंटन देखो, 2012 ओलंपिक मेडल, 2016 ओलंपिक मेडल, उसके बाद हर जगह, हर शहर में, छोटे छोटे शहर में सब ओलंपिक खेलने लगे। एंड दैट इज हाउ शिफ्ट होता है। Ma'am, the point that I was trying to make here is that as women, especially in this country, हमें अपने आप को थोड़ा ज़्यादा प्रूफ करना पड़ता है। आपने खुद ही बोला कि और अच्छा करना है, एक और वर्ल्ड कप जीतेंगे तब उस तरीके का वैल्यू दिखेगा। प्रूव नहीं, आई कैन पुट इट इन दैट वे दैट हमें हर चीज़ को अर्न करना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता। एंड उसके लिए आपको फिर से, आप एक अचीव किया तो फिर से आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं यही बोलती हूँ, हमेशा आप हमेशा एक्सपेक्ट मत करो पीपल विल कम एंड गिव इट यू, बेटर टू अर्न इट। यू टेक द चैलेंज and give your best, earn that things. That will be the ultimate joy, and people will start following you. And वही होगा फ्यूचर में। And that is my vision, that मैं देखना चाहती हूँ वुमेन्स क्रिकेट का खुद का एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे सब वुमेन्स क्रिकेटर रूल कर रहे हैं। आप जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो मैम, I feel that women cricketers deserve it 100 times more than that. And मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, I feel कि जितने भी लोग जिनकी बच्चियां फ्यूचर क्रिकेटर्स बनने वाली हैं, वो ज़रूर इस पार्ट को देखें। और वो इसीलिए क्योंकि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है इन women cricket as compared to men cricket, मेंस क्रिकेट में आप देखिए हमारा जो प्लेइंग 11 है जो इंडिया के लिए खेल रहा है, चाहे वो T20 हो या ODI, आपको 4-5 क्रिकेटर्स या उससे ज़्यादा क्रिकेटर्स ज़रूर मिलेंगे जिनके बच्चे हैं, जिनकी फैमिली है और वो फिर भी क्रिकेट खेल रहा है। विमेन क्रिकेट में ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। इज दैट द बिगेस्ट सैक्रिफाइस दैट विमेन क्रिकेटर्स मेक? It's not like that. As women, we have a lot of responsibility, and marriage is a huge responsibility. And as a professional athlete, what I feel that what I've gone through, I can tell about my thing. I cannot tell about others, because you have certain commitment to your country, because you are representing your country. As long as you are representing your country, you have huge commitment. And वहाँ पर आप कभी आप हल्के में नहीं ले सकते हो. So if you are committed to other stuff also, and you have to give equal time to that other commitment. करेक्ट. जहाँ पे आपका पार्टनर है, वहाँ पे मुश्किल होता है ये सब चीज़ें करना. बट वो तो मेन के लिए भी वैलिड है ना.
It's there for men's I cricket think also. men's के लिए इसलिए valid है because I don't know, again, अगर मैं इस बारे में टिप्पणी करूँगी तो बहुत सारे सवाल हो सकता है. मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, बट एक लड़की का शादी करने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल शादी करके आप अपने घर छोड़ के दूसरे के घर पे जाते हो, उस नया सेटअप के एडजस्ट करते हो, नया फैमिली को आपको अपनाना पड़ता है. वो एक ह्यूज चैलेंज है एज ए गर्ल. एंड उसके साथ आपके पास एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, परिवार को टेक केयर करना, सब कुछ. कहीं ना कहीं मेरे को लगता है मैं नहीं कर पाती थी ये चीज. मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने मेरा उस लाइफ को मैंने गिव अप किया क्रिकेट की वजह से. बिकॉज इफ यू आर प्लेइंग 20 years ऑफ क्रिकेट, प्रोफेशनल, आई मीन क्रिकेट नहीं, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, then it's difficult. You play for 5-7 years, then you retire from competitive sports, and then you go for your marriage life or personal life. But if you're playing long term, like 10 years, 12 years, 15 years, and you're trying to achieve certain big things like Olympic medal or World Cup or some other medal, it's very difficult because you are dreaming and you are visualizing for that. Each and every time your mindset is that, oh, tomorrow I have to do this, I have to achieve that, because next month I have my competition. Before competition I have to make sure that these are the point, I have to tick all those boxes, make sure that I'm 100% ready. Probably if all those things going on, maybe your partner will not understand that thing. Probably वो एक स्केरी पॉइंट है जहाँ पे आप अगर मैरिज लाइफ में चले जाओ, वहाँ जाके आप इस चीज़ को बैलेंस कर पाओगे क्या नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बैलेंसिंग करना उस चीज़ को. इतना आसान नहीं है. बट अगेन दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू. मैं 100% गलत भी हो सकती हूँ, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, इसलिए मैंने मेरा पर्सनल लाइफ को साइड में करके क्रिकेट पे फोकस किया था उस टाइम. पॉसिबल है विमेन क्रिकेटर्स के लिए ये दो बिल्कुल कर लाइफ सकते, काफी लोगों ने किया है, बट मेरा कंसर्न है आपको देन यू नीड ए गुड सपोर्ट फ्रॉम योर अदर हाफ. I find that so guided, so covered in women's cricket कि ना कोई women cricketer अपने पर्सनल लाइफ के बारे में खुल के बात भी करती है. It is completely a non-talked about subject, whereas men's cricket में that is not the case at all. See again, men's cricket is different, women's cricket is different. आप बोल रहे हो, मैं नहीं मानती. men's cricket में भी yes they do marriage and but अपना क्रिकेटिंग करियर को कभी भी अपने पीछे नहीं छोड़ा. हाँ, वो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्रिकेट के साथ रख के बाकी चीजें है. यहाँ पे गर्ल्स को शुरू से ही आपको फर्स्ट प्रायोरिटी क्रिकेट को लेके आगे बढ़ना पड़ता है. तो आपके पास टाइम कहाँ है सब, मतलब बाकी क्रिकेट के अलावा बाकी लाइफ को एक्सेप्ट करने की. You think एक ऐसा एग्जाम्पल बनना चाहिए women's cricket में जहाँ पे एक लेडी मैनेज कर पाए, because the girls who are coming in. मैं चाहती हूँ जो हम लोगों ने जो नहीं कर पाए अच्छा से. I need to have a very good life. End of the day, life is more important than everything. Yeah. So I hope आगे का लड़के और बेटर होंगे और मैच्योरिटी के साथ आएंगे. उनके पास ऑप्शंस बहुत आना चाहिए. हम लोग के पास ऑप्शन नहीं था उतना. क्रिकेट वाज अ वेरी मच लाइव एंड लाइवलीहुड के बीच में आ गया था. तो आई थिंक आज के जनरेशन में, फ्यूचर में विमेंस क्रिकेट उस जगह पे जाने वाले जहाँ पे लाइव और लाइवलीहुड के ऊपर भी कुछ है. हाँ, जिसमें आपको चॉइस ना करना पड़े. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. I really hope so कि we come to that. I also hope so that, Yeah. ma'am. All right, ma'am, very quickly, I'm going to ask you a bit of a rapid fire. All right? If you're ready for it. Bangsa? Not like you for sure, but first off, what pained more when you were coming into cricket? The lack of support, the lack of infrastructure, or the lack of respect? Two things. In rapid fire, I have to say two things quickly. First thing was infrastructure and respect. Respect. Has that changed for youngsters now? Yes. After last World Cup, 50 overs World Cup, जिस तरीके से women's cricket का एक revolution हुआ इंडिया में, definitely changes हुआ है. Mindset change हुआ है public का women's cricket के ऊपर.
Who's Jhulan Goswami without cricket? Very fun-loving, talkative girl, and I'm very much into in her own world. So, यही life है मेरा. Yeah. How do you think you want the world to remember you? Of course, the world remembers you as the face that changed Indian cricket, but how do you want your legacy to be like? As a nice human being have very honest person, have a lot of value for respect for others also, apart from cricketers. Do you at any time feel that cricket took a lot from you? Yes, because cricket is something in our time was definitely, it was huge task to achieve small thing, particularly getting those right facilities, right things in the right time. So yeah. As an athlete, one more thing, I'm sorry to interrupt. One more thing, as an athlete is getting right facilities very much important, very much necessity in early stage of career. If you don't have proper support and proper facilities, it's very difficult to achieve what you want to achieve in international circuit. What is that one decision in your life you'd like to change? Education? Education. Yeah. That's the one. Yeah. If you were educated in the way you wanted to be, right? Have a graduate, have a master's degree, what would you be today? Probably कोई कंपनी में काम करती थी और probably IAS ऑफिसर बन जाती थी. IAS officer. Yeah. IAS officer. DSP नहीं होंगे क्योंकि DSP के लिए बहुत सारे लोग हैं. IAS ऑफिसर हो जाऊंगी. होती थी. So that is one thing that you wanted to be. All right. Very quickly, best captain you've played under? I think many. Definitely, I'll go with Anjumdi because Anjumdi was one person who's always backed me whenever my ups and downs was there in early stage of my career, who always supported me, who always allowed me to express myself. So, Anjum was my best Anjum Chopra. captain. Yeah. Anjum Chopra, yes. Who's the batter that you feared bowling to? A fear in the sense I always enjoyed the challenge was Smriti. Because when I start bowling to her, and I used to feel that she is the one person I have to bowl with the more focus and more accuracy के साथ बॉल डालनी पड़ेगी क्योंकि ये लेंथ बहुत जल्दी पिक करते हैं and इसके पास शॉर्ट ऑप्शंस बहुत है. So for me, she was the biggest challenging batter I ever bowled in the nets. Who's your best friend in cricket? I have many. It's really difficult to tell one name, but definitely plenty of my good friends. I never have best friend in my life. I have very good friends in my cricket field. Jhulan Goswami, the coach, Jhulan Goswami, the commentator after cricket. I think Jhulan Goswami as a coach is the best things because commentator is a very difficult job, and coaching is I'm enjoying the most at this moment. That one thing that changed about women's cricket from when you played to now, apart from, of course, exposure and everything, what do you see in mindset? I think सबसे important है daring, clarity, and taking the risk. जो पहले सोचते थे हम लोग के टाइम में, अभी के लड़कियां रिस्क लेने में डाउट नहीं आता उनको. अगर they wants to hit. If they want to bowl bouncer, they want to bowl bouncer. They no matter what field setting is this. So they are more aware of certain things, and that's a good thing for women's cricket, good thing for development of women's cricket, because the visibility is so much, the number of matches you're playing, and particularly you're playing very shorter format game this more and more, like T20. So you have to be taking, having this mindset to take those risks. So I think our girls are working on it. Yeah. Lastly, ma'am, when is Chak Da Express coming? I'm waiting for it. And I'm also waiting. Hopefully, we'll see very soon, and hopefully things will be all right, and we'll able to see big screen. Have you seen the rushes? Is it doing justice to your story? I have seen. It's almost 95% completed movie, and it was amazing. And really enjoy way a script written and way screenplay done, and it was really nice. Okay, ma'am, it's been a pleasure. Thank you, so Riddhima. much. Thank you.
bad decision. ये सामने खड़ी है. आपने किया योगा आज? हाँ, थोड़ा सा फोटो डालने के लिए जितना करना चाहिए था उतना किया. So sorry. डिसिप्लिन चाहिए भाई, खाना के कंट्रोल करना. स्टेट लाइक कोलकाता तो और ज्यादा. हर चीज हाथ में सामने आ जाता है. और डिजर्ट्स, एक से एक डिजर्ट्स हैं यहाँ. कल मैंने खाना नहीं बोल के मैंने 1 स्पून 2 स्पून ले ही ली मैंने मिष्टी दही. मिष्टी दो. Yeah. Ready?